Hello learners, welcome to my YouTube channel. So in this video I'm going to cover the numerical portion of central tendency, and the medium of my language in this video will be both in English and Hindi. So आज हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, जिसमें कि हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसको हम बोलते हैं मीन, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, मीडियन जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, एंड मोड जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। सो आज हम सेंट्रल टेंडेंसी की न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे। एज आई होप आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उससे फेमिलियर होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग विच इज़ अरिथमेटिक मीन। हम अरिथमेटिक मीन को हम अरिथमेटिक मीन भी बोल सकते हैं और मीन को हम एवरेज भी बोल सकते हैं, और ये सबसे कॉमन मेथड है जो कि यूज़ होता है इन डिस्क्राइबिंग सेंट्रल टेंडेंसी। सो आई होप आपने पेन और कॉपी साथ में रखी होगी, एंड अगर नहीं रखी है तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड आप कॉपी और एक पेन या पेंसिल विच एवर इज़ नियर यू आप उसको ले सकते हैं। सो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इन जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहेंगे। सो मीन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, अगर हमारे पास डिस्क्रीट डेटा है सो उसमें हम मीन कैसे निकालते हैं, हम कंप्यूट कैसे करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मीन इन डिस्क्रीट फॉर्म। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज अपॉन नंबर ऑफ वैल्यूज। जैसे कि हमको पता होता है सम का मतलब होता है प्लस करना और डिवाइडेड बाय करना नंबर ऑफ वैल्यूज। सो मीन को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एक्स बार से। सो दीज आर द मेन थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड इन एग्जाम। मीन को हम जब भी लिखते हैं तो रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार के साथ। और मीन हम कैसे कंप्यूट करते हैं, बाय डिवाइडिंग सम ऑफ ऑल वैल्यूज बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स सी वन न्यूमेरिकल. So this is the numerical of arithmetic mean. We have discussed the formula, which is sum of all the numbers upon number of values. So sum means in the first question, which is the HP levels of the 10 women are given here: 12.5, 13, 10, 11.5, 11, 14, 9, 7.5, 10, and 12. So you have to calculate the mean HB of the sample. So by applying the formula, what you have to do, first you have to write mean, and x bar is equal to sum of all the values upon number of values. So what is the meaning of sum of all the values? You will add all these values together. You will add all these values together and you will divide the number by, आप किससे divide करेंगे? Yes, you will divide the number by 10. Why 10? You should always ask yourself why. Why is the most important factor in learning. So यहाँ पे हमने 10 क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So there are total number of 10 values. So what will be the mean when you will add all these values? You will get certain number. For example, it's just an example, it's not the accurate value. So you will divide 10 20 by 10, which is the number of values. You will get 2. So the mean will be 2. This is just an example. This is not the exact value by adding all of these. Okay, so this is how you can calculate or you can compute mean by applying this formula in the discrete form, which is sum of all the values upon number of values. So if the data is in continuous frequency distribution, what is the meaning of continuous frequency distribution? In which you have provided class intervals. So I hope you are familiar with what is class intervals, and what is inclusive class intervals, what are exclusive class intervals. So if you have any query regarding this, whatever I am teaching you, you can write in the comment section. I will revert back to you as soon as possible. So coming on the numerical, in the continuous form you will be given class interval. So you have the class interval and you have the frequency. So first, whenever the data is continuous, whenever the data is in continuous form, you first have to compute the midpoint, and you have to represent the midpoint with x. Okay, आपको क्या करना होता है, जब भी continuous form में data दिया होता है, जैसे कि class interval form में data आपको दिया होता है, आपको first आपको calculate करना होता है midpoint. And midpoint हमको क्यों कैलकुलेट करना होता है? बिकॉज द फॉर्मूला ऑफ द मीन इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म इज समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ. So we will discuss it later. First you have to think about
the midpoint. How we can calculate the midpoint, which is represented by x. हम midpoint को किससे represent करते हैं? x के साथ. Okay. So midpoint हमको कैसे निकालना होता है? 18 and 20. You have to add these numbers and you have to divide this number by 2. And what will be the midpoint? Oh, 1 second. So by adding these two numbers and by dividing it by 2, you will get the midpoint, which is 19. So अभी आप video pause करो and calculate करो कि what is the midpoint of this class interval, this class interval and this class interval. So by adding the upper limit and the lower limit and dividing it by 2, you will get the midpoint. Okay. This is the total frequency, summation of frequencies. The meaning of summation is adding. You have to add. The meaning of summation is add. Okay. So this is how you will get the midpoint, which is 19. Again, I will tell you, by adding the upper and the lower class interval and dividing it by 2, you will get your midpoint. And why we want midpoint, we will see. So see here, we will get the midpoint, and this is the formula. First we have to see the formula of the mean in the continuous form, summation of xf upon summation of f. This is the formula of the mean in the continuous form. So here the meaning of summation is the, सी हियर, इस समीशन के अंडर आपको x और f की वैल्यू, x और f लिखा हुआ है. इसका मतलब क्या हुआ? आपको इसमें x और f टोटल आपको चाहिए. सो आप कैसे करोगे? सबसे पहले आप xf निकालोगे. xf को कैसे निकालना आपको? बाय मल्टीप्लाइंग. You will multiply 19 by 18, similarly 22 by 20, 25 by 32, 28 by 7, 31 by 2, and you will get your answer. Okay. So this is only xf. This is not summation of xf. Summation means adding. And अब आप क्या करोगे? आप summation करोगे xf का. इन सारी values को आप add करोगे and finally you will get this number which is 1874. सबसे पहले हमने midpoint निकाला, then हमने xf निकाला, then हमने summation किया xf का. उसके बाद आप इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूला में पुट करेंगे, विच इज समीशन ऑफ xf अपॉन समीशन ऑफ f. एंड व्हाट इज समीशन ऑफ xf? यस, राइट, इट इज 1874. So you will write 1874. And what is the summation of f? You will add all these values and you will get your desired number, which is 80. So you will write this number under summation of f, which is 80, and you will get your mean score, which is 23.42, and this is your average arithmetic mean. So this was about mean. In upcoming videos I will discuss about median and mode also. Till then, you can subscribe this channel for if you want more lectures regarding research and statistics. Thank you so much.